हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा एम एस एक्सेल का। एक्सेल से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे उसका हम डिस्कस करेंगे। जो एम एस एक्सेल के हमारे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके यहाँ पे हम आंसर्स अलोंग विद क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपका अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट से आप लिख सकते हैं, तो आई आंसर फॉर योर क्वेरी। लाइक अब कोई भी क्वेरी हो सकता है इन क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। वैसे मैंने जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर प्रैक्टिकली आप कुछ कर रहे हो, अगर आपको ड्यूरिंग द प्रैक्टिकली आपका कोई क्वेरी होता है तो यू कैन आस्क मी, आई आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, we can discuss what is Microsoft Excel. So Microsoft Excel simply is a electrical worksheet or a spreadsheet application which is used to organizing or storing and manipulating and analyzing data. तो इट मीन्स एक्सेल एक हमारा वर्कशीट और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए और उसे मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं, विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछता है तो सिंपली आंसर कर सकते हैं, तो बेस्ट आंसर है ये। सो रिपीट में कोई भी आपको इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं आएगा। दिस इज बेस्ट आंसर, यू कैन यूज सेम। सो एंड सेकंड क्वेश्चन माइट भी हो सकता है, व्हाट इज और व्हाट आर सेल्स। सो सेल्स क्या होते हैं एक्सेल में। सो सेल्स, द एरिया वेयर डेटा इज स्टोर्ड इज नोन एज सेल। सो एरिया वे मैं एक्सेल खोल भी लेता हूँ एक बारी। so so this is the cell where we can see, this is the cell, like V is the column and row is this second row. So this is called cell, highlighted. So the area where data is stored, like I have stored my like COMPUTER and ING computer e-learning. So this is data I have inserted in a cell. So does each cell have unique address? Yes, each cell has unique address depend on the row and column. Yes, of course, each cell has unique address होता है. Suppose I am now in B column and second row, so we can see here this is the cell address B2. If I'll go here, then it's D2. So each cell has unique address, of course. Yeah, yes. How can you add cells row in a Excel? So there is 2 3 options where we can add row and columns in cell. So if you want to add a cell now, cell or row or column in Excel, right click on the cell you want to add. Uh, I just right click here, so we can see here. I'll go to insert, then we can see here we can insert left, right, entire row, entire column, so we can add like this. There is another shortcut key, like we'll discuss later on this. So how can you add cell, row or column in Excel? We already discussed this. We can go on next page. How would you format a cell? What are the options? So these are the format cell options. A cell can be formatted by using the format cell option. There are 6 format cell options: number, alignment, font, border, fill, protection. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा, व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट्स। सो माइट बी इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट्स, हाउ टू ऐड कमेंट्स इनटू अ सेल। सो वी कैन फॉलो दीज स्टेप। अगर हमें कमेंट्स ऐड करना है तो किसी भी सेल में, तो हाउ वी कैन ऐड comment are first thing, we need to describe why we are using comments. So comments are used to clarify the purpose of the cell. सपोज हमने कोई भी डेटा यहाँ पे कोई लिया हुआ है, तो वी डोंट नो लाइक ये किस लिए है इस सेल में डेटा या इसमें, तो लास्ट रो में जाके हम कोई कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस इज
for like this is this company data, this is this. Okay, so we can specify the purpose like किस लिए हम use कर रहे हैं. Comments are used to clarify the formula. If we will put any formula अगर हमने लगाया हुआ है किसी भी सेल में, तो we can put formula name वहाँ पे कि ये formula का name है, so that we can easily identify कि हाँ यहाँ पे इस वाले सेल में ये formula लगा हुआ है और ये formula का name ये है. Comments are used to leave notes, or we can mainly best answer ये होगा, comments are used to leave notes for other users about a cell. बेस्ट आंसर इसका ये होगा कि कमेंट जो भी हम कमेंट डालते हैं वो एक नोट होता है अदर यूजर्स के लिए. अगर कोई मेरे अलावा कोई डिफरेंट यूजर उसमें जा रहा है सीट में, तो वहाँ पे वो यूजर उस कमेंट को पढ़ के इजीली आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड कर सकता है कि दिस इज फॉर व्हाट. टू ऐड कमेंट, कमेंट ऐड करने के लिए हमें क्या करना, राइट क्लिक ऑन द सेल, चूज इंसर्ट कमेंट फ्रॉम द सेल मेन्यू, टाइप योर कमेंट, then hit enter. So simple, we can add comments. How does the red triangle indicate on the top right hand corner of the cell? This is the next question. जो red triangle होता है वो क्या indicate करता है? Red triangle at the top right hand corner of a cell indicate that is the comment. तो जब भी हम उस सेल पे पहुंच जाएंगे तो वो इंडिकेट करेगा, रेड ट्राइंगल होगा कि यहाँ पे कोई कमेंट्स है. तो जैसे ही हम उस पे अपने माउस को होवर्क करेंगे तो हमें वो कमेंट दिख जाएगा. If you put your cursor on it, it show the comment like we already discussed. How would you add comments to a cell? किसी सेल में हम कमेंट्स कैसे ऐड करेंगे? टू ऐड ए कमेंट टू अ सेल, यू राइट क्लिक ऑन द सेल, चूज द इंसर्ट कमांड, सॉरी इंसर्ट कमेंट, जो भी सेल में जो भी कमेंट इंसर्ट करना है, देन वी कैन टाइप आर कमेंट्स in the comments area provided by the Excel. Then a red triangle at the top right corner of the cell indicate there is a comment linked to a particular cell. If we want to remove that comment, where we need to go, right, what we need to remove the comment from a cell, right click at the cell, then select the delete comment from the cell menu. Then comment will be deleted. Then next question हमारा interviewer can ask like what are the chart in MS Excel. चार्ट क्या होता है MS Excel में? तो चार्ट बेसिकली आर यूज टू इनेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन एक्सेल. चार्ट बेसिकली किसी भी डेटा को ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. ये यूजर कैन use any type of chart including column, bar, line, pie, scatter, etc. By selecting the option from the insert tab. What is free span in MX Excel? This is mostly used. तो free span क्या होता है Excel में? Free span are used to lock any रो और कॉलम इन MS Excel. सपोज मेरे पास थाउजेंड्स कॉलम्स में डेटा है, फर्स्ट रो या सेकंड रो मुझे फ्रिज करना है, तो इजीली नेक्स्ट जो मैं 100 या 200 के बाद नीचे जाऊंगा तो मेरा फर्स्ट वाला जो भी हेडिंग्स होगा वो फ्रिज रहेगा, तो मैं डेटा को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये कॉलम में मेरा ये डेटा है, तो दिस इज यूज फॉर this. Even after we scroll up the sheet vertically or horizontally, fridge column or row will be appear to us. Which are the different workbook protection type in Excel. So there are three ways to protect a workbook in Excel. One is password protection for opening a workbook. While we will open our worksheet, तो वहाँ पे password पूछेगा. This is the first type of protection. Second protection हमारा ये है कि while we will add or delete, or if we will go to hide or unhide any sheet, then इस टाइम भी क्या पूछेगा, वो पासवर्ड पूछेगा. थर्ड हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम चेंजिंग द साइज और पोजीशन ऑफ अ विंडो. किसी विंडो का साइज पोजीशन चेंज करना है तो ये प्रोटेक्शन भी हम लगा सकते हैं. तो ये थ्री टाइप्स का प्रोटेक्शन है. तो जो भी कोई यूजर इनमें से कोई भी ऑपरेशन करेगा तो वहाँ पे पासवर्ड पूछेगा. And next question, what is the difference among counta, countif, and count blank in MX Excel? Sorry, count is used to count cell.
containing numbers, dates, etc. Any value stored in a number excluding blank. And counter or count all is used to count any cell value containing numbers, text, logical value, etc. Any type of value excluding blank. And count blank cells, count blank क्या होता है? Count blank cells or cells with an empty string. Count blank count the cell which is an empty string. Count if and count ifs count cell matching a certain criteria. What is ribbon? A ribbon specify an area which runs along the top of the application and contains menu items and toolbar available in Excel. The ribbon has various tabs that contain group, command for use in the application. So this is also an important tool. Uh, it is possible to hide or unhide the ribbon. Yes, we can hide or show or minimize or maximize the ribbon by pressing Ctrl F1. How to prevent someone from copying the cell from your worksheet? This is also important question कि हम कैसे prevent करेंगे किसी भी डेटा को कॉपी करने के लिए अपनी वर्कशीट से. If we want to protect or you want to protect your worksheet from being copied, go to menu. We need to go to menu, then go to review, then protect. Click on protect sheet and put password. Then worksheet will be protected. जब भी कोई ओपन कॉपी करेगा तो वहाँ पासवर्ड मांगेगा. By entering the password you can prevent your worksheet from getting copied. The next question, how to sum up the row and column number quickly in the Excel sheet. The sum function is used to get the total sum of the row and column in the Excel worksheet. The next question, how you can resize the column. There are two ways to resize the column. To change the width of the column, one is we can change the width of the column. Second is we can drag the uh, we can go to the top and we can drag like this. I am show you. So we can drag like this. We can resize our column. We can resize the row as well in similar way, or we can use this way. Click on this, then column width we can default is this, and we can use uh, 50, then it will resize like this. So there is two way. What are the several report format in Excel? So this is also question interview can ask, like the report format in Excel. So there is three types of report. One is compact, second report, third is tabular. So we can simply say, is it possible to mark pivot table using multiple source of data? If the multiple source is different worksheet from the same workbook, then you can use or we can use these multiple source of data to make pivot table. How can you check whether the pivot table is modified or not? We can use pivot table update to check these things. What does the if function in Excel? If function is used in Excel to check whether the certain condition are true or false. If the condition is true, then it will give in the result accordingly, and if condition is false, then result output will be different or output will not come. So if simply we can identify, like if we will put any condition, then condition will be true. In this case, we will get an answer. The next question, what is the filter? Should be used if you want to more than two condition, or if you want to analyze the last using database function. You should use advanced criteria filter to analyze the list test more than two conditions. We can use advanced criteria filter to check this. What are the advantage of using formula in Excel sheet? Formula make the easy to calculate the number in Excel sheet. It also calculate automatically in the number replaced by the another number or digit. It is used to make the complex calculation easily. Of course, yeah.
So this is the good answer. And next question, what is the order of sequence in operating mathematical operations in Excel? In Excel, if we will going to do long calculation, then in this case, what method will be used? तो interview can ask this question, like क्या sequence होगा, कोई भी like कोई मैंने क्वेश्चन दिया प्लस कहीं सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट एंड ऑल ये सब मैंने दिए हैं, तो सबसे पहले किस सीक्वेंस में वो कैलकुलेशन होगा. सो दिस इज द बैड मास मेथड सीक्वेंस. सो दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट will be solved by this, in Excel, then exponents, then division, then multiplication, then addition, then subtraction. So this is the sequence for mathematical operation. Then next question is, what is the use of lookup function in MS Excel? The lookup function is used to return the value from an array. What is the macro in Excel? How to create a macro? Macro is the set of instructions that is recorded by a user for uh, repeating purposes. If we will going to do some tasks and we need to repeat this again and again, in this case we can use this macro. It is created by the user for repetitive instruction and functions they perform on a regular basis. How would you reduce the file size? What is the easiest way to reduce the file size? Yeah, this is the question. So how we can reduce? There is several points. Find the last cell that contain the data. Then in last, then we can delete all the row and column after the cell वेयर जहाँ पे हमारा डेटा फिनिश हो रहा है, वहाँ से लेके लास्ट तक का सेल्स हम डिलीट कर सकते हैं, रो एंड सिमिलर वे में कॉलम्स सारा सेलेक्ट करके. टू डिलीट ऑल द रो, प्रेस द शिफ्ट स्पेस की. we can use this shift and space key, then press this from your keyboard. Row will get selected, and then we can press Ctrl minus plus to delete the blank row. To delete the column, press the Ctrl plus space key, then Ctrl shift right arrow key in your worksheet like this. Then we can use this to delete. Like यहाँ से मुझे डिलीट करना है, तो ये कंट्रोल शिफ्ट एरो की से भी मैं कर सकता हूँ, और ये मैंने कंट्रोल माइनस किया, दिस इज द शॉर्टकट की, देन ऑल द डेटा विल बी डिलीटेड. Similar way we can use this control shift down arrow key, then we can press control minus, all the below rows will be deleted. Then how this is the we can do Google for this, how many row and column are there in MX Excel 2003 and later versions. So these are the summarized till 2013 version. For latest version you can do Google, and for later on version you can do Google and put here. What is the syntax of VLOOKUP? So this is very important function which is used in Excel. So VLOOKUP syntax is like, we need to you know click put is equal to like this, is equal to VLOOKUP like this. So we can see here VLOOKUP lookup value. We need to select lookup value. हमें क्या lookup value select करना है, which will be unique column. एंड टेबल एरे, जिसमें से भी मुझे डेटा लेना है वो सेलेक्ट करूंगा. कॉलम इंडेक्स, किस कॉलम का मुझे डेटा लेना है. देन रेंज दूंगा मैं 0 और 1, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, तो मेरा डेटा आ जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इज इट पॉसिबल टू मेक प्राइवेट टेबल यूजिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ डेटा? यस, इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग डेटा मॉडलिंग टेक्निक. या सो दैट्स ऑल आई थिंक. सो वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एक्सेल से रिलेटेड यहाँ पे मैंने काफ़ी और भी वीडियो डाली हुई हैं, तो यू कैन गो इन प्लेलिस्ट, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बहुत सारी वीडियोज एक्सेल से रिलेटेड, एक्सेल शॉर्टकट और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो यहाँ पे डली हुई हैं. तो यू कैन सी ऑल द मटेरियल्स रिलेटेड टू एक्सेल, एम एस वर्ड, फोटोशॉप एंड बैंकिंग से रिलेटेड, और बहुत सारी वीडियोज यहाँ पे पड़ी हुई हैं. तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन इम्प्रूव योर नॉलेज
और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं सो दैट कि उनको भी नॉलेज मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग। हैव ए गुड डे।